Good evening, everyone. A very warm welcome to each one of you from joining the UDAAN webinar. I am Nandini, and on behalf of entire Nursing Next Live, I welcome you all to another exciting session of UDAAN for the student by the student. So before we begin, I just want to make sure that everyone can hear me. Please type yes or no in the chat box. Okay. And also tell us in chat which course are you pursuing? BSc, GNM, intern, and from which institute you are. So sorry for the interruption. Yes, so I can see a few response passed out from Shada University, third year, second year. Great. So I hope many students join us for the first time. So let me briefly introduce UDAAN webinar. UDAAN is the student-centric webinar initiative by Nursing Next Live, specially designed to help students strengthen their academic concepts, improve clinical understanding, and receive career guidance from our experienced experts. So every session is focused on topics that are relevant for your university exam, clinical postings, viva, future nursing career. So if you are here today, you are definitely investing your future in the healthcare professional. So as you all know, every year from 1st to 7th August is celebrated worldwide as Breastfeeding Week. And this year's global theme is breastfeeding for sustainable start in the life, strengthen what works. So breastfeeding is not just an important exam topic, and as a future nurses, you will counsel mothers, assist in postnatal care, and play a key role in promoting successful breastfeeding. That's why today's session is going to be extremely valuable, not just academically but clinically as well. So this is what you will get in the next 60 minutes of the session. We will begin with the introduction of Nursing Next Live, introduction of our speakers, then our scientific content on the breastfeeding. Then we will have guidance from our Margdarshak. And then at last, you will have a question and answer round and a special reward QR code. I hope you will stay till the end of the webinar. So this is all about NNL1. Nursing Next Live, now redefined as NNL1, is an affiliate of CBS Publishers and Distributors Private Limited, a pioneer in health sciences publishing known for its visionary approach and impactful contributions to academic excellence. After establishing a presence in publishing industry, CBS ventured into nursing edtech space with a mission to deliver high quality nursing education accessible anytime, anywhere. Launched in August 2020 as Nursing Next Live, the platform was created to build the bridge between the educational gap and medical nursing domains. Today, NNL1 has evolved into a comprehensive learning ecosystem catering into diverse academic needs of nursing students, ranging from undergraduate programs to competitive examinations such as NORCET, NCLEX, and MSc Nursing. All content is aligned with the latest INC syllabus and curated by leading experts in the medical and nursing fields to provide a future-ready learning experience. With a steadfast commitment to advancing nursing education, NNL1 has expanded its scope beyond online learning. Having successfully established itself in the online education domain, NNL1 has now ventured into offline education with its first physical center in Noida, Uttar Pradesh, where two batches have already achieved promising outcomes. In 2025, NNL1 is proud to launch its first satellite center, NNL EduHub, in Jaipur, Rajasthan. And now in 2026, we have launched our third physical center in Bangalore. So our offline initiatives NNL Academy offers an enriching blend of classroom learning and interactive sessions led by esteemed educators. Students benefit from state-of-art facilities including a CBT lab, simulation-based clinical learning, in-person doubt-clearing sessions, certification programs, and personality development modules. So this holistic approach ensures that students gain both academic excellence as well as practical proficiency. So these are the few reasons why NNL Academy is students' first choice for a reason. Okay, we have top educators called mastermind faculty. We have exceptional quality content with comprehensive range of tests from basic to advanced level. We provide step-by-step guided study.
continuously updated content to stay ahead, engaging learning experience, and of course, we have high rate of success in NORCET. It is trusted by toppers, and we do provide the comprehensive study material and continuous guidance and counseling by our Margdarshaks. So far, we have achieved 8100 plus selections in AIMS NORCET through Plan C+, Plan QB, Fast Track, and NL Academy over the last 5 to 6 years. And now, who doesn't love rewards? We have something special for you all today. A few participants, lucky participants, I must say, will win a Masterstroke Volume 3 book. Okay, and that's not all. Every eligible participants who attend the webinar and submits the feedback form will receive the e-certificate. So make sure you stay till the end. Okay, so that you don't miss the lucky draw. So now comes the most awaited part of today's webinar. It gives me an immense pleasure to introduce our expert speaker, Dr. Rizu, who is Assistant Professor at GIMS, Greater Noida. Ma'am has extensive experience in nursing education and has guided countless students with her expertise in obstetrics and midwifery. So today she will be speaking on breastfeeding for a sustainable start in life, strengthen that works. So I encourage all of you to take notes and post your questions in the chat box. We will take them up during the question and answer session. Okay. And next up we have our Margdarshak, Miss Aarushi Yadav, who is AIR 65 in NORCET 6. Okay, she is graduated from RAK College of Nursing and she is currently serving at RML Hospital, Delhi. So I welcome both our speakers to today's webinar. So without further delay, I request Dr. Rizu ma'am to kindly take over the session. Thank you, Nandini. Thank you for the introduction. So firstly, I want to just thank the NL Academy and you, Nandini, for giving me this opportunity to conduct this session. So It's a without pleasure, wasting ma'am. time, I'll just share my screen. Is it Yes, visible ma'am. to you, It is visible. my screen? Yes, ma'am. It is visible. Okay. So the topic for today, the theme is given by the WHO, that is breastfeeding for a sustainable start in life, strengthen what works. So as we know, every year, optimal breastfeeding, just give me 1 sec because our faces are visible in the right corner. I can't see the content. Okay. So every year, optimal breastfeeding could save more than 8 lakh children's lives worldwide. Yet millions of the babies still do not receive exclusive breastfeeding for the first 6 months. So this means we are lacking somewhere so that we are not able to educate the woman or the patient the benefits of the breastfeeding. That's why there are so many children which are having this kind of which are not receiving the exclusive breastfeeding, which can lead to millions of the problems in later on lives. So this year theme is breastfeeding for sustainable start in life, strengthen what works, which remind us that breastfeeding is not merely a feeding method. It is one of the most effective public health intervention for improving maternal, newborn, and environment health. So what basically the WHO theme it is. So we want to have a sustainable start in life. Means if we start the bottle feeding or formula feeding, it will create a generous number of the waste products, which is not good for our planet. So breastfeeding is a safer choice and the best choice for us. So definition, it's like, I don't want to read it. Everyone knows what is breastfeeding. It's like infant, it's like when the mother is giving the breast milk directly to the infant. It's called a breastfeeding, which basically provide nutrition, promotes healthy growth and protect disease. So it is a natural method of feeding an infant with breast milk produced by mother's mammary glands, either directly from the breast or as express breastfeeding. So what is? So if someone will tell you what is the first vaccine the baby received, so please don't say BCG, okay? It is a breastfeeding. The breast milk is a special colostrum is the first vaccine the baby receives from the mother.
So what is the importance of the breastfeeding? It is rich in antibodies. It promotes brain development. It protects mothers from diseases. Not only the child, it also protects the mother. It lowers the risk of breast cancer, ovarian cancer, and type 2 diabetes mellitus. It creates emotional bondings between the mother and the child, which even reduce the level of stress, which reduce the cortisol hormone in the mother's body. It reduces the neonatal mortality. As we know, the newborn can be prevent from the major illnesses, and even we can prevent the mortality rate. So if we talk about the global scenario, so what WHO recommend exclusive breastfeeding for 6 months, continued breastfeeding up to 2 years or beyond, and after even giving these kind of recommendation, only about 48% of the infants worldwide are exclusively breast for the 6 months. That's mean the rest percent, that's mean the rest 52% are not having a exclusive breastfeeding. So improving breastfeeding rates could save hundreds of thousands of children's lives every year. So if we talk about the India has improved significantly through, as we have launched variety of policies by Poshan Abhiyan, Lakshya, Ma program, and baby friendly hospital initiative. By Poshan, you can say that it will promote the optimal nutrition for mother and child. It focused the first 1,000 days, which means the government will give you the nutrition by first 2 years after from the pregnancy to the 2 years, and it improves the awareness on the breastfeeding on infant and young child feeding. And if we talk about the Lakshya, by the Lakshya, it has for the ensure the RMC, which is respectful maternity care. It focuses on privacy, dignity, and support, plus it encourages early initiation of breastfeeding. There's a MA program. In MA program, it basically focuses on the promoting the breastfeeding and complementary feeding. It provides counseling and hand-holding support, as like we can where the nurses play the majority, which there will be a teaching awareness for the breastfeeding. It strengthens community mobilization and mother support. Then there will be a BFHI, which I think everyone knows about it. Then what is the UNICEF and WHO recommendation? So WHO and UNICEF recommendation aimed at ensuring optimal nutrition, growth, development, and survival of infant and young child from birth to 2 years. The focus is the initial years of the child. So what is this infant and young child feeding recommendation by the WHO is early initiation of breastfeeding within first hour of birth, exclusive breastfeeding for the first 6 months, timely complementary feeding is like begin at 6 months with safe, adequate, and age-appropriate complementary feedings. Continued breastfeeding up to 2 years of age or beyond, along with complementary foods. Appropriate feeding during illness. It's like we can't say mother is not well, even the baby is not well. In any condition, we should not stop breastfeeding. And then we should provide extra nutritious food after recovery to support catch-up growth. So what basically the WHO recommendation is good feeding today for a healthier tomorrow. So the position of the breastfeeding, there is a certain kind of position which anyways the variable in which position mother is comfortable to feed the baby, we should tell the mother to use that position. But still these are the some position in which it maintain a very good body posture. It's like cross cradle hold, football hold, inverted sideline position, cradle hold, upright, which we call cola hold, and then laid back position and sideline cradle. These are certain kind of position, and many of the time you will see these kind of question in your university examination. Then physiology basis of breastfeeding, most common question comes from this kind of topic is what is the physiology of breastfeeding? Okay, so in the book you can see there are four phases of the physiology, but here I have divided in only three phases: lactogenesis 1, lactogenesis 2, and lactogenesis 3. And the main hormone regulation by which is the prolactin and oxytocin. If you see the images, you can see it is all related to the mother's mind and the baby sucking abilities. Okay, it connected through the hypothalamus
And by the posterior pituitary secrete the oxytocin, and the anterior pituitary secrete the prolactin. So what exactly happens when the baby sucks the mother's nipple? The receptor from the nipples give the message to the hypothalamus to give the stimulation to the anterior pituitary. Anterior pituitary will produce the prolactin, and what prolactin will do? It will produce the milk. And then by the oxytocin, what oxytocin will do? It will help to eject the milk from the nipples, and it will go to the baby's mouth. That's why this is very important. And when the mother is just delivered, initially there will be a problem because there is no proper latchment. And then people and the mother will feel that she is not able to produce enough milk. But the more the latchment, the more the feeding, the more the production. We should tell the patient. Now, benefit for the infants we were talking about, there's a million and zillion kind of benefit for the infants. So there is a sum of the benefits which I have written is like respiratory infection. As we know, the baby's lungs anyway is very immature till the age of 8 years. So if we have some kind of breastfeeding, we should always support for breastfeeding. So it will reduce the respiratory infection, diarrheal disease, because if you are using a bottle feed or formula feed, it can cause a variety of problem which can lead to a diarrheal problem and can lead to a infant mortality, like otitis media, necrotizing enterocolitis, SIDS, childhood obesity, diabetes, and allergy. These kind of the benefit. These are the reduced from the breastfeeding. It is also enhanced cognitive development and educational attainment. Even the so many studies support this kind of thing that the child who have been given the exclusive breastfeeding will improve through the cognitive, and there will be a certain kind of educational attainment compared with the formula and the bottle feed babies. And if we talk about the benefits for the mother, it promotes the uterine involution. It is very important postpartumly to prevent the PPH. It reduces the postpartum hemorrhage, which I just talked about. It lowers the breast cancer risk. It lowers the ovarian cancer risk. It reduces the type 2 diabetes. It improves cardiovascular health. It supports mental well-being. It enhances mother-infant bonding. So if like breastfeeding is a win-win situation for the mother and the baby, and there is no extra payment you need to do for that. And economical benefit, it reduces the healthcare expenditure, it lowers the hospitalization cost, it improves workforce productivity, it reduces household spending on infant formula, it generates long-term economic returns through healthier population. Investment in breastfeeding support yields substantial economical benefits to the society. And if we talk about environment sustainability, which is the main theme of this year, so it produces zero packaging waste. It requires no manufacturing. It has a negligible carbon footprint. It conserves water resources. It minimizes plastic pollution. It reduces greenhouse gas emission. So breastfeeding contributes to climate resilience. So breastfeeding and child development, the research demonstrate that researchers has shown that it improved the IQ, it improved the language development, it improved the school performance of the child, emotional regulation will be better than the others, social behaviors are better, early nutrition influences lifelong human capital will be there. So basically it's a betterment for the nation and the society. So if we talk about the SDG goal, which is given by the UNICEF and the WHO, the SDG, though how many SDG goals the breastfeeding has covered is total is 6, SDG 2, SDG 3, 5, 10, 12, and 13. It's related to the zero hunger, good health and well-being, gender equality, reduces inequalities, responsible consumption, and climate action. So what are the challenges? It's like, it's very easy to tell mother, okay, do exclusive breastfeeding, but there are certain kind of challenges mother might have. A major barriers is one of it is a cesarean delivery. As we know, the prevalence of cesarean delivery is now too much. So the mothers feels very difficult to breastfeed the baby. Even after one, just as we know, just after the 1 hour delivery, we should initiate the essential breastfeeding. But for the mother with cesarean delivery, it is little difficult to 1 to 2 days. So
And then again, cesarean section, mother was having pain, couldn't start early, so there will be a delayed initiation. Delayed initiation can lead to a suppression of those hormones which I was talking about, oxytocin and the prolactin. And if the mother is working, there will be a workplace constraint, inadequate maternity leave in the private sectors. Formula marketing is there. It's like formula will say, oh, the breastfeed, this formula milk is better than the breastfeeding because this formula milk is having these kind of supplements which breastfeeding doesn't have. That kind of marketing can make up major barriers. And there will be a cultural misconception, as we know that like so many areas believe that they should not give colostrum, right? So this is a cultural misconception. Poor counseling, if it is there, social inequities, if it is there. So breastfeeding outcomes are shaped by the health system and the social environments. So this is all about the content. So I'll ask some of the question and please write the answer in the chat box. And then later on I'll say who's right and who's wrong. Okay. So this is the first question. First time mother states, my baby cries often, so I don't think I am producing enough milk. Which is the nurse best response? A, start with supplementing with formula. B, breastfeeding should be stopped. C, frequent crying does not always indicate inadequate milk. Let's assess the baby's latch and feeding pattern. And D, your breasts are probably too small. Okay, students, write the answer in the chat box. Nani, please tell me how many are saying which option. Sure, ma'am. All of them wrote C. Oh, very good. So you don't need this class. The C is the correct answer. If the baby is cry, doesn't mean the baby is even baby is hungry and there is no there is inadequate milk. There can be a too many problem related to this. It can be a baby latch problem or feeding patterns problem, or maybe a baby a colic. There can be any other reason than inadequate milk. So we should not make a mother to feel a guilt that she's not producing enough milk. So another question is, this is the last one. Which newborn is at greatest risk if breastfeeding is delayed? Healthy newborn at 39 weeks, infant born by elective cesarean section, baby weight 3.2 kg, or low birth weight infant. Write your answer that which newborn is at greatest risk if breastfeeding is delayed. So the answer is option D. It's a low birth weight infant is a greatest risk. So we should, if we know the baby birth weight is less than 2500 grams, we should focus on the giving the baby breastfeed as early as possible. So what is the take home message? So small steps, big impact. As a nurse, what you can do, the first are matters. So initiation, early initiation always matter. And the first 6 months also matter. First 6 months, only exclusive breastfeeding. No water, no honey, no grape water, okay? And then third, every feed matters. Okay, doesn't think about, okay, this feed the baby has taken properly. Now the another feed can be like for only 5 minutes. So every feeds matter for the adequate growth of the infant. And then every mother's needs support, unlike whether she is multigravida or primigravida. Every time, every mother needs support in breastfeeding, and every nurse can make a difference. Okay, so with your knowledge, compassion, and guidance, nurses empowers mothers and create a healthier generation. So I'll conclude this topic with breastfeeding is a nature's first gift to every newborn. When we protect, promote, and support breastfeeding, we invest in healthier children, empowered mothers, stronger families, and a sustainable future. Thank you. If you have any queries, please write in a chat box or raise your hand. Thank you so much, ma'am, for such a wonderful and informative session. I'm Thank sure you. all our students learned something valuable today. Yes?
Yes, if you have any questions from ma'am is here, please ask. You can ask all your queries related to the topic. Okay, so I cannot see any query. I hope everything is clear to you all, right? Okay, so let's move further. Ma'am, kindly turn off your screen sharing. Okay, so now learning from experts is important, but learning from someone who has already achieved success makes the journey even more inspiring. So let's now welcome our Margdarshak, Miss Aarushi Yadav, who will share practical preparation tips and guidance with all of you. So, ma'am, over to you. Thank you so much. Hello, everyone. Good evening. So, I'm your Margdarshak. Today, I'm not here only as a speaker, but I will guide you as a Margdarshak. So, studying about breastfeeding is important because as a future nurse, you have to help your patient so that she can feel more confident in breastfeeding her baby. एज अ नर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेशेंट को अच्छे से गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करो रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड उस उस पर्टिकुलर पेशेंट का भी इट्स फर्स्ट टाइम शी इज बिकमिंग अ मदर शी डजेंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करना है और कैसे नहीं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एज अ नर्स हम उसको थोड़ा सा काउंसिल करें बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर टाइम ना पेशेंट इज ऑल्सो वेरी एंक्शियस पेशेंट को समझ नहीं आता पोस्ट सिजेरियन या पोस्ट एनबीडी पेशेंट इज एंक्शियस पेशेंट इज इन पेन तो एक मदर को समझ नहीं आता कि हाउ टू ब्रेस्ट फीड अ बेबी इस टाइम पे जिस तरीके से यू टॉक टू द पेशेंट यू कम्युनिकेट विद द पेशेंट यू एडवाइज द पेशेंट कि ऐसा नहीं ऐसा करना है दिस इज हाउ वी कैन हेल्प यू डील विद योर बेबी हाउ टू ब्रेस्ट फीड योर बेबी ये ना एक लाइफ लॉन्ग मेमोरी रह जाती है inside a patient's heart inside a mother hearts कि मैं एडमिट थी एंड द नर्स ट्रीटेड मी इन दिस सच अ मैनर कि उन्होंने मुझे बहुत ही काम मैनर से समझाया था हाउ टू ब्रेस्ट फीड माई बेबी सो ये एक लाइफ लॉन्ग अगर आप अच्छे से नहीं समझाओगे ना पेशेंट को तो ये एक लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा रह जाएगा इनसाइड अ मदर कि आई वॉज एडमिटेड एंड सो नर्स आई थी और वो मुझे उन्होंने इतना रूडली बिहेव किया या फिर उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड नहीं किया रिगार्डिंग द ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी ये हो गया आपका मेटर्नल बेनिफिट बिकॉज मदर के लिए बहुत जरूरी है ब्रेस्ट फीडिंग को समझना कि उसको कैसे करवाना है बिकॉज विद इन 3 डेज जब वो हॉस्पिटलाइज हैं तब तो शी विल ब्रेस्ट फीड द बेबी बट जब वो घर चली जाएंगी ना उसके बाद उनको रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होगा ब्रेस्ट फीडिंग में तो वहां पर एक नर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है कि हाउ आर यू टीचिंग द पेशेंट इतने अच्छे से उनको समझाओ एंड ट्राई टू ऑब्जर्व सबसे पहले बिफोर प्रोवाइडिंग कि हम सिर्फ एक थियोरेटिकल नॉलेज एक मदर को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू ऑब्जर्व द मदर ऑब्जर्व करो कि एक मदर को कितनी नॉलेज है रिगार्डिंग द ब्रेस्ट फीडिंग एंड उसको कितना आता है कि वो कैसे अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रही है फिर जहां पर भी आपको एक लूप होल मिलता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना है प्रॉपर लैचिंग करानी है साइन ऑफ गुड अटैचमेंट then you go on and you teach the mother regarding all these things नाउ आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन कि अगर एक मदर आपको बोलती है कि आई थिंक माई बेबी इज नॉट फीडिंग मेरा बेबी फीड नहीं ले रहा उसको इनफ मिल्क नहीं मिल रहा तो आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा वुड इट बी लाइक थियोरटिकल कि ऐसा नहीं ऐसा करो ऐसा नहीं ऐसा करो मिल्क प्रोड्यूस होगा आप प्रॉपर अटैच नहीं कर रहे आप प्रॉपर लैच नहीं कर रहे या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ऑब्जर्व कि पेशेंट को कितनी नॉलेज है एंड एक मदर कैसे लैच करा रही है या फिर उनको कितना पता है रिगार्डिंग द गुड लैचमेंट एंड अटैचमेंट ऑफ द बेबी क्या रहेगा आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स दिस इज यूजुअली ये ना हमारी टेक्स्ट बुक के नॉलेज में नहीं होता हमारी टेक्स्ट बुक के नॉलेज में हम ये यस एग्जैक्टली वेरी गुड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम योर साइड
टेक्स्ट बुक के नॉलेज में हमें ये सब कुछ मिल जाता है कि हमें क्या चीज देखनी है एंड क्या चीज नहीं देखनी। बट सबसे पहले ना, अगर आप रियल लाइफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस से पूछोगे एंड इफ यू गो इन क्लिनिकल्स, यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू रियलाइज कि मदर का एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ नॉलेज क्या है। सारी मदर्स प्राइमरी नहीं होती, कुछ मल्टी ग्रेविडा भी होती हैं, कुछ का सेकेंड बेबी होता है, थर्ड बेबी होता है। तो सबसे पहले आप पेशेंट से पूछो कि आपको कितना आता है, आप क्या ब्रेस्ट फीड कराओ। यू विल ऑब्जर्व द पेशेंट, जहां भी कमी आ रही है ना वहां पर आप पेशेंट को टीच करोगे, ठीक है। दिस इज वेयर एज अ नर्स हमें सीखना है कि सिर्फ टेक्स्ट बुक नॉलेज में रटा रटाया हमें अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में, या फिर जब आप नॉट सेट क्रैक कर लोगे, या फिर अभी आप एज अ यूजी स्टूडेंट जब अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में जा रहे हो, तो आपको किस तरीके से अपनी टेक्स्ट बुक नॉलेज को इस तरीके से मॉड्यूलेट करना है कि आप पेशेंट की हेल्प कर पाओ, ठीक है। अगर आप सारी टेक्स्ट बुक नॉलेज को इंग्लिश इंग्लिश में पेशेंट को समझा रहे हो तो पेशेंट तो नहीं समझेगा ना। तो आपको उसकी लैंग्वेज में उसको उस तरीके से समझाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं दूसरी चीज पे बात करना चाहूंगी, दैट ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट अ मदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज नॉट ओनली अ मदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेफिनेटली एक मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट सिर्फ अगर वो हॉस्पिटलाइज है ना, तो सिर्फ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू ब्रेस्ट फीड। पेशेंट के जो साथ में अटेंडेंट होते हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड एज अ नर्स हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेबी अच्छे से फीड करे। आपको हर 2 घंटे के अंदर मदर को एजुकेट करना है कि एवरी 2 आवरली आपको बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना ही है। अगर वो नहीं कराएंगी, एंड पर्टिकुलरली एवरी 2 आवरली बेबी को 15 to 20 मिनट्स ब्रेस्ट फीड कराना ही। इन द मिडल ऑफ दैट बच्चा सो जाएगा तो बच्चे को टिकल करके सेंसरी स्टिमुलेशन देके बेबी को वेकअप करना है। बट प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है ना, जब पोस्ट एनवीडी एंड पोस्ट सिजेरियन वाली मदर्स होती है ना, दे आर टू टायर्ड, दे आर इन पेन, उनको पेन होता है। सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम उनको इतना होश नहीं होता कि 15-20 मिनट मुझे फीड कराना है। तो इस टाइम पे उनके साथ में जो रुक रहे हैं ना, उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, and हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है टू ऑब्जर्व द बेबी एंड टू ऑब्जर्व द मदर कि वो फीड करा पा रही है एंड करा रही है या नहीं करा रही है, ठीक है। बिकॉज अगर बेबी ने प्रॉपर फीड नहीं लिया तो बेबी का वेट लॉस होगा, बेबी का बिलीरुबिन हाई होगा एंड फोटोथेरेपी लग जाएगी, ठीक है। पोस्ट और भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक मदर इस कंडीशन में होती है, शी इज इन पेन, शी इज एंग्शियस, तो वो नहीं करा पाती, देयरफॉर शी नीड्स आवर सपोर्ट। तो हमें सबसे पहले तो अपनी थियोरेटिकल नॉलेज फुल रखनी है कि किस तरीके से फीड कराना है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या नहीं है, क्या करना, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। एंड देन आपको एज अ सक्सेसफुल नर्स कम्युनिकेशन भी आना चाहिए कि कैसे आपको ये चीज मदर से निकलवानी है कि आप फीड करा रहे हो अच्छे से या नहीं करा रहे। बिकॉज आप कभी भी जाओगे ना, बिकॉज करंटली आई एम वर्किंग इन लेबर रूम एंड एंटीनेटल पोस्टनेटल वार्ड इन माई हॉस्पिटल। तो आप कभी भी मदर के पास जाओगे ना एंड यू विल आस्क कि अच्छा बच्चा फीड कर रहा है, हर फर्स्ट रिस्पॉन्स विल बी हाँ हाँ बहुत अच्छे से कर रहा है, ये तो सोता ही रहता है। बट दैट स्लीप, बच्चा तो सोएगा ही, बट यू हैव टू एसेस कि बच्चा फीड कर भी रहा है या नहीं कर रहा। टेल द मदर कि इमिडिएटली मुझे एक बार ब्रेस्ट फीड करा के दिखाओ, एसेस कि बच्चा फीड कर भी रहा है या नहीं कर रहा, मदर करा पा रही है या नहीं करा पा रही है, ठीक है। अगर आप सिर्फ पेशेंट से वर्बली पूछ के आ जाओगे तो वो आपको रिप्लाई में हाँ ही बोलेंगे, बट लॉस पेशेंट का नहीं होगा, लॉस बेबी का होगा, ठीक है, वेट लॉस हो जाएगा बच्चे का। नाउ अब हम आते हैं कि एज अ यूजी स्टूडेंट आपको ब्रेस्ट फीडिंग टॉपिक क्यों पढ़ना है। अगर आप अपने यूजी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो या फिर अगर आप अपने नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ब्रेस्ट फीडिंग से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एंड यूजी पॉइंट ऑफ व्यू में तो ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज उसके आपके यूजी एग्जाम्स में एक शॉर्ट नोट या एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जरूर आएगा। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे या इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स पे हाईलाइट करूं अंडर ब्रेस्ट फीडिंग, इट इज एंटीनेटल ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब मदर ना फर्स्ट टाइम ना एंटीनेटल ओपीडी में आती है ना हमारे पास, आपका ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइडिंग टू द मदर वहीं से स्टार्ट हो जाता है। जरूरी नहीं है कि ब्रेस्ट फीडिंग आप तभी पेशेंट को सिखाओगे जब वो पोस्टनेटल मदर बन जाएगी। आपको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पेशेंट को, मदर को तभी से बताना है जब से वो एंटीनेटल फर्स्ट विजिट पे आएगी, ठीक है। सो एंटीनेटल ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेशन, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग,
विद इन 30 मिनट्स आफ्टर डिलीवरिंग बेबी ब्रेस्ट फीड पे लग जाना चाहिए, बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना ही है। दिस इज द WHO प्रोटोकॉल। करेक्ट पोजीशनिंग एंड अटैचमेंट, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप मदर को कभी नहीं बता पाओगे कि करेक्ट पोजीशनिंग एंड अटैचमेंट क्या है। सो थियोरटिकल नॉलेज में पढ़ने के बाद जब भी अब आप अपने क्लिनिकल्स में जा रहे हो तो आप जरूर प्रैक्टिकल में करेक्ट साइन ऑफ पोजिशनिंग एंड अटैचमेंट करके देखोगे, एंड यू विल बी एबल टू को रिलेट कि मैंने थ्योरी में क्या पढ़ा। एंड कॉमन कंसर्न्स रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग, कुछ बहुत ही कॉमन कंसर्न्स होते हैं, जैसे कुछ लोग इंडियन रिचुअल्स में बोलते हैं कि जब तक हम घर नहीं जाएंगे, जब तक एक मदर बाथ नहीं लेगी, हम ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट नहीं कर सकते। तो जब आप इस तरीके के कंसर्न सुनोगे ना मदर के, सो इट इज नॉट कि आप एकदम से बोलोगे अच्छा ऐसा थोड़ी होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन कि वो लोग क्या बोल रहे हैं और उनकी सोसाइटी में क्या चीज फॉलो होती है। उसके बाद बहुत ही मैनरिज्म के साथ यू विल ट्राई टू मैनिपुलेट द पेशेंट कि नहीं, इसके पीछे कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं है। विद इन हाफ एन आवर ऑफ डिलीवरिंग द बेबी यू हैव टू स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तरीके के नॉर्म्स होते हैं एंड मिथ्स होती हैं रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग। वो मिथ्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड वो मिथ्स क्लियर भी किस तरीके से करना है, एक रिस्पेक्टफुल मैनर के तरीके से, जिससे पेशेंट के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। एंड सपोर्टिव एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक मदर को अच्छे से समझाना है कि सिर्फ 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना है, ऊपर से कोई उनको हनी नहीं चटाना, कोई ऊपर का पानी नहीं पिलाना। बिकॉज बहुत कॉमन मिथ होती है कि बच्चे को सबसे पहले शहद चटाना है, उसके बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी है या ऊपर का दूध पिलाना है। तो ये मिथ हमें तोड़नी है। ठीक है, वो लोग कहते हैं कि अच्छा हम लोग पानी पिला दें बच्चे को। तो ये चीजें, ये एजुकेशन आपको प्रोवाइड करना है। एंड डोंट डोंट थिंक दैट दे आर सिली कि अच्छा ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं पानी पिला दें, उन्हें नहीं पता। दिस इज वॉट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम देम। पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट को नहीं पता, उन्होंने पढ़ाई नहीं करी। ठीक है, हमने करी है, सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनको बहुत ही रिस्पेक्टफुल मैनर से ये चीज समझाएं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ओके, नाउ एज अ मार्गदर्शक माय लास्ट मैसेज टू यू ऑल विल बी कि एक गुड नर्स जो होती है, शी डजंट सिंपली टेल अ मदर कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, अ गुड नर्स ऑलवेज ऑब्जर्व, शी लिसन्स एंड शी टीच एंड डेमोन्स्ट्रेट अ मदर की क्या करना है। देखो, ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही टेडियस टास्क है। जो भी साथ में अटेंडेंट रुकते हैं उनकी कमर दुख जाती है ब्रेस्ट फीडिंग कराने में। तो एक ये बहुत ही टीडियस टास्क है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो जब आप एक मदर को बताओगे ना कि प्रॉपर लैचिंग, प्रॉपर पोजीशनिंग, प्रॉपर अटैचमेंट क्या है, तो हो सकता है आपको भी 15 to 20 मिनट्स कॉन्टिन्यूसली बेबी के साथ रहना पड़े उसको ब्रेस्ट फीडिंग सिखाने के लिए। बच्चा बार बार सो जाएगा, तो यू हैव टू टेल कि ऐसे उठाना है, ऐसे उठाना है। बच्चे की सकिंग अगर पुअर होगी तो आपको वहां पे ऑब्जर्व करने के लिए रहना है। सो एक गुड नर्स का काम सिर्फ ये नहीं है कि आप पेशेंट के बेड साइड पे गए, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो एंड आ गए, नहीं। एक गुड नर्स का काम है सबसे पहले जाओ, उसको कम्युनिकेट इतने अच्छे तरीके से करो कि पेशेंट या मदर अपनी प्रॉब्लम बता सके कि मैम ये फीड नहीं कर रहा, मेरा बेबी फीड नहीं कर पा रहा। ठीक है, कम्युनिकेशन इज द की, बात करने का तरीका होना चाहिए। सेकंड थिंग, ऑब्जर्व करो। सबसे पहले मदर को बोलो अच्छा ठीक है आप ब्रेस्ट फीड पे लगाओ, आप मुझे बताओ आपको कितना आता है। एंड थर्ड थिंग इज पेशेंट को डेमोन्स्ट्रेट करो। ये नहीं कि सिर्फ बताकर आ गए कि ऐसा होना चाहिए, इतने मिनट कराना है, ऐसे लगाओ, नहीं। डेमोन्स्ट्रेट करो, उनको अच्छे से सिखाओ, समझाओ। बिकॉज एट द एंड ब्रेस्ट फीडिंग मैटर्स बोथ फॉर बेबी एंड मदर। एंड ये एक लाइफ लॉन्ग मदर के हार्ट में रह जाता है कि वो एक नर्स थी जो आई थी एंड शी हेल्प मी ब्रेस्ट फीडिंग माई बेबी। सो प्लीज ट्राई टू बेस्ट यूटिलाइज योर एजुकेशन। जो भी आप टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हो उसका, उस नॉलेज का बेस्ट यूज करो एंड ट्राई टू हेल्प योर पेशेंट्स। Okay, thank you from my, that's all from my side. Thank you so much. Thank you so much, Miss Aarushi. It was a wonderful session with you. Okay, so students, if you have any questions from Aarushi ma'am, we will have a question and answer round at the end of the session. You can ask then. Okay, so let's move further.
यस, सो स्टूडेंट्स नाउ, अब आपको पता चल गया है कि जो भी आज का साइंटिफिक टॉपिक था, आपको एनएनएल के बारे में भी पता चल गया है। हमारे मार्गदर्शक, हमारी फैकल्टी, यू हैव नोन सो मच ऑफ अस। नाउ मेनी ऑफ स्टूडेंट्स आज कि मैम हम प्रिपरेशन कैसे कंसिस्टेंटली करें, हम अपने कॉन्सेप्ट्स कैसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करें, हमें प्रॉपर मेंटोरशिप चाहिए हमारी थ्रू आउट दी प्रिपरेशन को लेके। तो टू आंसर टू दीज क्वेश्चंस आवर टीम, the NNL has now introduced the plan UG all in one. Okay, this is specially designed for the UG students, the undergraduate students, and the syllabus is completely aligned with the INC, latest guidelines of INC. ओके, तो अब हम जानते हैं कि इस प्लान में क्या क्या चीजें हैं जो आपको प्रोवाइड हो रही हैं। सबसे पहले यू विल गेट दी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। जो भी आईएनसी गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी अंडर ग्रेजुएट्स के लिए कॉन्सेप्ट्स मैटर करते हैं, जो भी टॉपिक्स हैं जो आपको कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, बिकॉज लेट्स बी ट्रू, कॉलेज में जितना पढ़ाया जाता है दैट इज इनफ फॉर द कॉलेज एग्जाम, बट दैट इज नॉट इनफ फॉर द एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप में से कोई गवर्नमेंट एग्जाम या आगे अब्रॉड किसी भी चीज के लिए अगर आप सोच रहे हो, तो उसके लिए अभी से टाइम है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बेसिक से स्ट्रॉन्ग करो। बिकॉज आप 4 साल बीएससी या जीएनएम को 3 साल देने के बाद अगर आप सोचो कि मैं शुरू से शुरुआत करूंगा, देन इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ टाइम वेस्ट भी होता है उसमें, और बहुत सारी चीजें होती है जो शुरू से नहीं पढ़ी जाती है। तो नाउ इज द टाइम कि आप अभी से अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। मेनी ऑफ यू आर इन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो आप अभी से अगर अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करोगे तो it will help you in the future. Okay, so we provide deep conceptual understanding through our e-notes. Okay, then we also have the conceptual practice, which means practice oriented learning through various tests and assignment. अब सिर्फ पढ़ तो लिया आपने, टॉपिक पढ़ लिया, आपको समझ भी आ गया, बट आपको कितना समझ आया ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप टेस्ट दोगे, जब आप असाइनमेंट्स करोगे, राइट? सो फॉर दैट वी हैव टॉपिक वाइज टेस्ट, वी हैव सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, हमारे जीटीज होते हैं, मिनी टेस्ट हैं। ओके, देयर आर वैरायटी ऑफ टेस्ट विच वी प्रोवाइड। ओके, देन वी हैव कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। अब कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में क्या है, ये आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे हमारी एनएनएल ऐप पे। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट के, एक एक टॉपिक के हमारे डिटेल्ड फाउंडेशन सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो भी हैं उनसे एक डिटेल्ड रिकॉर्डिंग में सारे टॉपिक्स के आपको कॉन्सेप्चुअल क्लासेस मिलेंगी, जो आप कभी भी देख सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि आज अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी तो वो आप दोबारा उस चीज को नहीं देख पाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास वो 24/7 अवेलेबल है क्लासेस, आप कभी भी जाके एनएनएल ऐप पे वो रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो। ओके, देन दिस इज न्यू, वी हैव कॉन्सेप्चुअल प्रोसीजर्स। अब क्लिनिकल स्किल्स भी डेवलप करनी है, ऑफकोर्स अगर कल को जाके आपको फ्यूचर में एज अ नर्स प्रैक्टिस करना है तो इट रिक्वायर्स क्लिनिकल स्किल्स एज वेल। So to practice from basic to advanced, we have our CBT labs also. We have the NNL Delta, which is known for the conceptual procedures. जो भी INC से related procedures होते हैं, जो आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे भी कराए जाते हैं, we have all the procedures included in this plan. Okay, then of course we also have the conceptual revision, which is exam focused. एग्जाम से पहले जो भी रिवीजन की नीड होती है कि आपने पढ़ाई कर ली बट अब आपको नहीं पता कि एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स क्या हैं, कि किन चीजों पे फोकस करना चाहिए और किन चीजों को थोड़ा छोड़ना चाहिए, तो इट इज ऑल इंक्लूडेड इन आवर कॉन्सेप्चुअल रिवीजन। ओके, सो इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच फ्रॉम यूजी टू ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यूजी के लिए, यूजी सेंट्रिक ही आपको कंटेंट मिलेगा, नहीं। इफ यू ऑप्ट फॉर दिस प्लान, आपको यूजी से लेकर अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फ्यूचर में देते हो तो आपको सबका कंटेंट इसमें मिल जाएगा। ओके, वी ऑल्सो हैव द डिटेल्ड कवरेज, सारे टॉपिक्स जो भी यूजी या कॉम्पिटिटिव अप्रोच से जो भी टॉपिक्स जो है नेसेसरी है उनका डिटेल्ड कवरेज है। ओके, प्लस पीपीटी टीचिंग फॉर with illustrations, nursing implementation and clinical relevance will be provided. Okay, and yes, it is available in hybrid mode, both recorded and live. कुछ लेक्चर्स होंगे जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, कुछ लेक्चर्स होंगे जो आपको लाइव फॉर्म में मिलेंगे, या हो सकता है कि जो लेक्चर्स लाइव हो रहे हैं वो ही आपको रिकॉर्डेड भी मिल रहे हैं ताकि आपका कोई लेक्चर मिस नहीं हो।
ठीक है. We also have our Margdarshak. One of the Margdarshak is Miss Aarushi. You have already met her. So like this, we have a complete team of Margdarshak for mentorship and guidance. So why UG All-in-One stands out? These are few core features of our plan. Okay, this has dual success approach in which master UG exams plus competitive exams together. अगर आप एक ये एग्जाम अगर ये प्लान लेते हो तो as I told you कि आपको UG एग्जाम और competitive exams का together एक integrated ecosystem मिल जाएगा. Then you have INC syllabus. Okay, for both BSc Nursing and GNM students, top UG mastermind faculties. This plan bridges the theoretical knowledge with clinical. Of course, अगर हम जो थ्योरी आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहे हैं वो चीज हम आपको क्लिनिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी उसकी प्रोवाइड कर रहे हैं. Okay. Structured 5C system, as I already told you, these are the 5Cs: conceptual learning, practice, classes, procedures, and revision. Okay. Then we have high yield university exam preparation. Now this includes CB-VAT. CB-VAT क्या है? हमारे वीडियो असेसमेंट टेस्ट है, कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो असेसमेंट टेस्ट. इसमें क्या होता है, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है अब उसका एक वीडियो फॉर्म में असेसमेंट टेस्ट होता है सबके टॉपिक वाइज के पास. जो भी आपने लेक्चर देखा उसके साथ आपको CB-VAT मिलेगा टू असेस कि आपको कितना समझ आया है. देन वी हैव MCQs, यूनिट टेस्ट, प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर्स एंड परीक्षा सीरीज फॉर एग्जाम मास्टरी. We also have simulation based clinical procedure training. इसमें जो भी OSCE based और real scenario videos होती हैं for practical knowledge, it is provided. Then we have Margdarshan by AIMS rank holders and toppers by our Margdarshaks. Okay. Then smart performance tracking and follow up. In this you will get dedicated academic tracking system to monitor accuracy of progress, weak areas and improvement. So it is a complete digital learning ecosystem. It is a one platform for lectures, notes, assignments, revision, tests, doubt solving, mentorship, anytime, anywhere. मतलब अगर आप एक ये प्लान आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको पूरा एक लर्निंग इकोसिस्टम मिल जाएगा विच विल बी रेलिवेंट फॉर बोथ नॉर्सेट और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड एज वेल एज यूजी. Okay. Now, currently, we are providing a pre-launch offer. We are providing free access to this plan for 1 month exclusively for the nursing students. आपको अगर ये फ्री प्लान चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ ये QR कोड जो यहाँ पे मेंशन है, दिस QR कोड यू हैव टू स्कैन एंड यू हैव टू लाइक एंड फॉलो UG ऑल इन वन सोशल मीडिया पेजेस. वी हैव UG ऑल इन वन पेज, इसका स्कैनर इंस्टाग्राम का आपको दिख रहा होगा यहाँ साइड पे, और फेसबुक का. सो दीज आर दी सोशल मीडिया एक्सेस. अगर आप इन QR कोड को स्कैन करते हो, लाइक करते हो और फॉलो करते हो, ओके, देन आवर टीम विल कनेक्ट विद यू फॉर द डिटेल्स एंड सोशल मीडिया एंगेजमेंट एंड देन यू कैन रजिस्टर फॉर द प्लान फॉर फ्री. आपको 1 मंथ का एक्सेस फ्री दिया जाएगा. यू जस्ट हैव टू स्कैन दिस QR कोड्स, लाइक आवर पोस्ट एंड फॉलो आवर पेजेस. ओके, और आपको मिलेगा क्या क्या इस फ्री प्लान में? स्ट्रक्चर्ड वीडियो लेक्चर्स, लर्निंग कॉन्सेप्ट बेस्ड INC अलाइंड कंटेंट, क्लिनिकल एंड एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन and learning from the expert faculties. So this is all you will get in our 1 month of free subscription. So please do scan this QR code. I'm giving you 1 minute of time. You can take a picture of this or you can scan it right now to access the free plan. These are the मार्गदर्शक्स. ओके, ये हमारी पूरी टीम है मार्गदर्शक की एंड देयर आर फ्यू मोर मार्गदर्शक्स. ओके, so as you can see they are all NORCET rank holders and they are working in AIMS and other government hospitals as nursing officers. So you will get complete guidance and counseling apart from the academics from them. Okay, so now it's time for our interactive question and answer round. If you have any questions related to the topic today or guidance and counseling or any book, course or anything which you want to ask,
Please type them in the chat box. We'll try to answer as many questions as possible. So you have time. You can ask questions. So by the time you are asking the questions, you can scan this QR code, the Masterstroke Volume 3 book, which I mentioned in the starting of the session as the reward book. ठीक है, तो अगर आप ये QR कोड स्कैन करोगे यू विल गेट दी क्वेश्चंस. ओके, आपको 5 क्वेश्चंस की एक क्विज मिलेगी. ओके, तो क्राइटेरिया क्या है? अगर जिसके सारे आंसर्स लाइक ऑल दी 5 आंसर्स विल बी करेक्ट ऑल्सो इन द मिनिमम टाइम पीरियड. इट्स नॉट लाइक कि अगर आपने रात को 11 बजे 12 बजे 10 बजे उसको परफॉर्म किया एंड यू गेट ऑल द आंसर्स करेक्ट, दैट विल नॉट बी काउंटेड. इफ यू scan the QR code now and you get the all answers correct, you will have the chance to win a special reward. Okay, so there are only two criteria, the fastest finger and the 5 on 5 marks. So take a picture of this or scan the QR code right now and answer all the questions. And if you have any questions related to the topic, guidance, counseling, anything, you can ask in the chat box. We are giving you 2 to 3 minutes more and then we will wrap up. I cannot see any questions, so I am hoping that everything is clear to every one of you. So let's wrap up with this session. So as we come to today's end of the session, I would like to sincerely thank our respected faculty, our Margdarshak, and each one of you taking out your valuable time to join us. Your participation is what makes UDAAN truly special. So before you leave, please don't forget to scan the QR code and attempt the quiz. Also, we will be giving you a feedback form. Okay, maybe today or tomorrow morning you will receive on your WhatsApp. Please do fulfill that feedback form and your suggestions will help us improve every session. Sorry. And now, just a minute. So thank you each one of you again for attending the UDAAN. Keep learning, keep growing and continue making a difference as in future nurses. We look forward to meeting you again in the next UDAAN webinar. Have a wonderful evening and take care.